In this video, we will talk about velocity. तो velocity रा definition कौन? It is the rate of change of position. तो change of position को हमें आगुरु कथा है this can also be called displacement. So we can say velocity is the rate of displacement with time. तो या माने कौन देखो? The velocity v can be calculated as displacement divided by time. तो पर यूनिट टाइम केते डिस्प्लेसमेंट होउची सेटा को हमें वेलोसिटी बोली कहबा. नाउ यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, डिस्प्लेसमेंट ता हमें जानिचे इट्स अ वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करी कि जो वेलोसिटी कैलकुलेशन होउची दैट आल्सो इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ता माने वेलोसिटी रो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रहिची. तो इफ यू वांट टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ताले आमे आइदर तार वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड को चेंज करि परिबा और तार डायरेक्शन को चेंज करि परिबा, और इफ यू वांट वी कैन चेंज आल्सो बोथ. तो एठी एबे दीटा टर्म आसीबो देखो, गोटे होची यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गोटे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने कोन? अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी if the magnitude as well as direction of its velocity remains same. तो जदि वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दुईटा जाक चेंज होउनी, सेम रहुची, then the particle is said to have a uniform velocity. So this is possible only when the particle moves in the same straight line without reversing its direction. तमाने गोटे स्ट्रेट लाइन रे गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे, डायरेक्शन को भी रिवर्स करा हबनी, तो गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे जदि पार्टिकलटा सेम स्पीड रे मूव करी करी चलला ताहले हमें कहबा तार यूनिफॉर्म वेलोसिटी अछि. But a particle is said to have a non-uniform velocity if either of magnitude or direction of its velocity changes or both of them change. तो जदि वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज हे गला कि डायरेक्शन चेंज हे गला कि दिटे जको मिसी की चेंज हे गला, then we would say the particle has a non-uniform velocity. तो एई चैप्टर रे तो हमें वन डायमेंशनल मोशन विषय रे कथा हबा. सो व्हेन वी आर डीलिंग विथ अ वन डायमेंशनल मोशन, सेठी हमरो बॉडी रो मोशन टा एई गोटिए डायरेक्शन बा गोटिए स्ट्रेट लाइन रे होउची. तो एई जो स्ट्रेट लाइन टा हमें नैचे सेठी गोटे ओरिजिन पॉइंट सेट करबा. एनीथिंग टू द राइट ऑफ दिस ओरिजिन पॉइंट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव and anything to the left of this origin point is taken as negative. ता माने कोन? जदि गोटे बॉडी रो डिस्प्लेसमेंट राइट को हैला ताहले तार डिस्प्लेसमेंट रो वैल्यू टा हमें पॉजिटिव नबा, आ जदि लेफ्ट को डिस्प्लेसमेंट हैला ताहले तार वैल्यू को हमें नेगेटिव नबा. तो सेम लॉजिक आल्सो गोस फॉर वेलोसिटी. जदि वेलोसिटी रो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट अछि, वेलोसिटी को हमें पॉजिटिव नबा. जदि वेलोसिटी रो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट अछि ताहले हमें वेलोसिटी को नेगेटिव नबा. सो फॉर वन डायमेंशनल मोशन एठी हमें वेलोसिटी रो जेहेतु दीटा ही पॉसिबल डायरेक्शन अछि, आइदर राइट को जिवो और लेफ्ट को जिवो, तो सेठी हमें डायरेक्शन ऊपर बेसी फोकस न करिकी रादर को डायरेक्शन रे वेलोसिटी रहिला ताकू तार साइन द्वारा रिप्रेजेंट करिबा. तो रिमेंबर दिस, इट इज पॉजिटिव व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, इट इज नेगेटिव व्हेन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो जेकोसी डायरेक्शन रे हमर एमती मोशन होउची, आमे सेही डायरेक्शन रे पॉजिटिव कि नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नै कि डायरेक्शन को रेफर करि परिबा. Now there are two kinds of calculations we can do with respect to velocity. One of the quantities is called average velocity. तो average velocity रो definition हला, it is displacement divided by time taken. तो ताको हमें ए भलिया गोटे फार्मूला देकी लिख परिबा, v average is delta r by delta t, जोठी की r जोटा लिखा है r वेक्टर, it is the position vector. तो delta r means change in position. तो लेट्स से गोटे पार्टिकल रो इनिशियल पोजीशन वेक्टर थिला r i वेक्टर, आउ फाइनल पोजीशन वेक्टर अछि r f वेक्टर. तो delta r which is the change in position is always defined as final minus initial position. तो सब बेले एटा मन रखिबो, फाइनल माइनस इनिशियल करके आमे चेंज इन पोजीशन को कैलकुलेट करछे. तो दैट चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय सेही चेंज होबा पई केते टाइम लागिची, दैट टाइम इज डेल्टा टी. तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम.
or change in position divided by time taken for that change. That defines the average velocity. Now there is another kind of velocity we can calculate which is called a instantaneous velocity. तो instantaneous velocity रो अर्थ हेउची velocity at a given moment of time. ताले instantaneous velocity को केमती calculate करा जिवो ता पय गोटे छोटो चित्र माध्यम रे बुझौची देखो. Suppose this is our xy plane, this is x axis, this is y axis, and there is a particle which is initially at this point. आउ ए पॉइंट रु पार्टिकल टा मूव करके फाइनली इट इज एट दिस पॉइंट. तो ये एबे देखो जदि हमें ओरिजिन को इनिशियल पोजीशन सहित जोड़ी की गोटे वेक्टर नबा, दिस विल बी द इनिशियल पोजीशन वेक्टर. सेमती जदि फाइनल पॉइंट आ ओरिजिन याकू जोड़ी की गोटे वेक्टर बनेबा ताले दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर. तो आमे जो डेल्टा आर बाहर करछे व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल position vector and initial position vector. तो तार difference टा हमें represent कले ए diagram रे it will be represented as another vector joining the initial with the final position. तो ए जो vector टा आसुची this is our delta r vector. तो that delta r divided by time taken for it. Position टा initial रू final change होबा को जति की time लगिची से time टा divide कले आमे एवरेज वेलोसिटी पाउचे. तो एठी हबे देखो जदि हमें एठी एई चेंज पाइन जेतिकी टाइम लागिची ताठू जदि लेस अमाउंट रो टाइम कंसीडर करिबा ताले हमर पोजीशन टा फाइनल पोजीशन रो टिके आगो को जिवो. तो सपोज आई टेक दिस एज माय फाइनल पोजीशन, ताले इनिशियल रो एई पर्यंत जिबा पई जेतिकी टाइम लागिची दैट इज क्लियरली लेस देन द टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रीच दिस पॉइंट. ताले हम जदि टाइम इंटरवल टा को टिके छोटो कर देले से अनुसार पोजीशन वेक्टर जो चेंज होउची जोटा को डेल्टा आर लेखुच सेटा भी छोटो हे गला. तो सही भलिया इफ यू कीप रिड्यूसिंग द टाइम इंटरवल से अनुसार फाइनल पोजीशन टा इनिशियल पोजीशन आड़ को क्लोजर हे चलिबो. तो से अनुसार तमर जो पोजीशन चेंज इन पोजीशन वेक्टर नौतले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नौतले तार भी वैल्यू टा कम हे चलिबो. So the idea is ये जो calculation टा हमें करूचे delta r divided by delta t, if you decrease the value of delta t ताहले delta r रो भी value टा decrease करूची. तो एट जदि हमें delta t टा को छोटो करी करी बहुत छोटो कर देले so that the value of delta t tends to zero, माने almost zero time रो gap गोटे नौचो हला. एटा exactly zero नुहो, almost zero, very close to zero. ताले डेल्टा आर भी बहुत छोटो हो जिवो. तो सेही केस रे ए दिटार जो रेशियो आसीबो दैट इज रेफर्ड टू एज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. तो ताको हमें केमती लिखिबा, ताको हमें ए भलिया लिखिबा. इट इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, माने डेल्टा टी रो वैल्यू टा जीरो को बहुत पाख को गले तमरो ए रेशियो रो वैल्यू टा जहा हबो सेटा को हमें इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहूचे. तो that is technically or mathematically written as dr by dt. तो r वेक्टर टा हमर होची पोजीशन वेक्टर, ताले पोजीशन वेक्टर रो डेरिवेटिव with respect to time, that is what instantaneous velocity represents. तेनु instantaneous velocity जोटा कि normally एमती v लेखा जिवो ताको तुमे डिफाइन करिवो as dr by dt. तो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला, आगो को ए फार्मूला रो बहुत यूसेज रहिबो, तेनु ठीक से यार डेफिनेशन को मने रखो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर टर्म कॉल्ड एक्सेलरेशन. अच्छा, एक्सेलरेशन कौन? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तमाने जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी चेंज होथाए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तारो रेट ऑफ चेंज टा कौन, which means you can calculate acceleration. Let's say acceleration is a, so we can calculate acceleration as change in velocity divided by time. तो per unit time आमर velocity केते change हला सेटा जदि हमें जानिचे सेथुर हमें acceleration को calculate कर देई परिबा. Now like velocity was a vector, सेथुर जो acceleration calculate होची that also is a vector. तेनु acceleration रो value टा हम जेतले नौचे तार magnitude and direction दुईटा जाक नबाकू पड़िबो.
और तुम एमती कहि पारो इफ अ बॉडी हैज एक्सेलरेशन दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम। तो गोटे बॉडी रो एक्सेलरेशन आउ चेंज इन वेलोसिटी को जदि लिंक करबा को चाहिबा वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो फर्स्ट सिचुएशन आछी देखो व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, माने वेलोसिटी रो जो चेंज टा होची दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी रिमेन सेम। ताले सेही केस रे हम कोन कहि परिबा, सेही केस रे हम कहिबा एक्सेलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर टा जो डायरेक्शन रे अछि जदि एक्सेलरेशन ताको परपेंडिकुलर रहिला ताले सेही केस रे वेलोसिटी रो जो चेंज हबो दैट इज ओनली फॉर और दैट इज ओनली विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट द मैग्नीट्यूड। बट व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, तमे देखिलो वेलोसिटी रो केवल मैग्नीट्यूड टा चेंज होची, डायरेक्शन सेम अछि, ताहले तमे कहि परिबो एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। तो या माने कोन, सपोज दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर, तो जदि एक्सेलरेशन वेक्टर टा आइदर वेलोसिटी रो डायरेक्शन रे अछि और वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन रे अछि, ताले एई भलिया सिचुएशन रे वेलोसिटी रो केवल मैग्नीट्यूड टा अफेक्टेड हबो। तो परे हमें कैलकुलेशन कला बेले देखिबा व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन सेठी वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करिवो, आ जदि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि ताले सेठी वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड टा डिक्रीज करिवो। तो स्पेशली जेतोळे हमें मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस करिबा सेठी ए जिंसटा आहुरी एविडेंट हबो। एंड देयर कैन आल्सो बी अ सिचुएशन वेयर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। तो सेटा केतेबेले हबो व्हेन एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, one of them is perpendicular to velocity and another component is parallel or anti-parallel to velocity। तो एठी हमें कहि परिबा एक्सेलरेशन रो जो दीटा कंपोनेंट रहिला, the one which is perpendicular to velocity is responsible for the change in direction of velocity, और जो कंपोनेंट टा वेलोसिटी सहित पैरेलल की एंटी पैरेलल रहउची that is responsible for changing the magnitude। तो एटा जनरल सिस्टम टा, या ऊपर जो एग्जांपल्स आसीबो we will see those examples when we discuss 2D or 3D motion। one dimensional motion रे एई पार्ट टा एबे एप्लीकेबल नुह। तो one dimensional motion रे हमें प्राइमरीली ए जो सेकंड सिचुएशन सहित डील करबा। तो जेमति हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिले, सिमिलरली वी कैन हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is said to have uniform acceleration if magnitude and direction of acceleration remains constant during the particle motion। तो जेतु एक्सेलरेशन टा गोटे वेक्टर, जदि तार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दुईटा जक जिनस कांस्टेंट रहिला then it is said to have a uniform acceleration। But if either magnitude or direction or both of them are changing, ताहले से केस रे हमें कहबा there is non uniform acceleration। and just like velocity तमे गोटे एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करि परिबो आउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करि परिबो। now average acceleration is given by this simple formula delta v by delta t, where delta v is defined as change in velocity which is final velocity v2 minus initial velocity v1। तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके हमें चेंज इन वेलोसिटी बाहर कले डिवाइडेड बाय एई चेंज पाई जेति की टाइम लागिची सेटा हला डेल्टा टी। तो जदि डेल्टा टी डिवाइड कलो यू गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा एठी जदि एठी ए रेशियोटा नेला बेलकू हमें डेल्टा टी टा को बहुत स्मॉल कर दबा, छोटो कर दबा, टेंडिंग टू जीरो नबा, so that we can write it like this acceleration is equal to delta v by delta t limit delta t tends to 0। then this technically becomes equal to dv by dt which is the derivative of velocity with respect to time। so this is known as instantaneous acceleration or acceleration of an object at a given moment of time। तो average acceleration केमती कैलकुलेट होउची, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन केमती कैलकुलेट होउची, एगुड़ाकर नोशन और डेफिनेशन क्लियरली बुझ। तो एठी जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विषय में कथा हेले ताकू रिलेट करके आउ दीटा इंपोर्टेंट रिलेशन अछि
one of them is like this. ए रिलेशन टा केमती आसला देखो आमे एक्सेलरेशन को लिखिले dv by dt आउ आगुरु आमे कथा हिचे velocity is dx की dr by dt where r is the position vector ताले जो dv by dt टा को आमे एमती लिख परिबा it is d by dt of dr by dt तो this is written as d2r by dt2 this is called second derivative of r with respect to time माने तमे जदि r रो गोटे डेरिवेटिव नेलो with respect to time that gives you velocity और velocity रो पुणी जदि डेरिवेटिव नेलो with respect to time then you get acceleration तमाने acceleration is equal to derivative of r with respect to time taken two times तमे दुई थर डेरिवेटिव नेले बाहर करिवो तेनु ताको हमें लिख परिबा acceleration a is equal to d2r by dt2 तो एठी जदि हमें पोजीशन टा along x डिफाइन करूचे तो r जगह जदि x नबा ताको एमती भी लिख परिबा d2x by dt2 where x is the position vector अच्छा से भलिया आ गोटे इंपोर्टेंट रिलेशन होची एटा देखो हमें एक्सेलरेशन को लिखिले dv by dt now this is equal to dv by dx into dx by dt ए भलिया लिखि हबो we can multiply and divide dx the value doesn't change a ratio टा एबे भी equal to dv by dt now what is dx by dt जदि x टा को हमें पोजीशन धरिचे ताले dx by dt is derivative of position with respect to time जोटा को हमें velocity कहूचे तो dx by dt is v ताले acceleration becomes v into dv by dx all right so this is also another important relation acceleration can be written as v dv by dx किंवा dx जगह तुम dr भी लिख पारो where r is the position so these differential relations are extremely important और याकु नै कि कैलकुलेशंस भी आसे तो एगुडा को टिके ठीक से बुझो आउ केमती यूज होउची ताको हमें एग्जांपल थ्रू रे देखिबा तो एठी गोटे छोटिया एग्जांपल हमें नैचे देखो the question says the displacement x of a particle along a straight line at a time t is given by this तो एठी displacement x रो वैल्यू टा ए भलिया आसुची with respect to time what is the acceleration of the particle now since x is the displacement आमे कहि परिबा velocity is dx by dt तो x हमको एठी देइची केते it is d by dt of x is equal to a naught plus a1t plus a2t square ताले बे ए टर्म रो ए एक्सप्रेशन रो डेरिवेटिव नेले फर्स्ट टर्म a naught is a constant रो डेरिवेटिव होची 0 प्लस सेकंड टर्म टा अछि a1t तो d by dt of a1t is a1 into dt by dt is 1 तो सेकेंड टर्म रो डेरिवेटिव हे गला a1 प्लस थर्ड टर्म रो डेरिवेटिव कोन a2 टा कांस्टेंट तक अलगा रखो and it is dt square by dt now dt square by dt is 2t तो डेरिवेटिव रो स्टैंडर्ड फार्मूला यूज करके हम सेटा को 2t लिख परिबा so this becomes 0 plus a1 plus a2 into 2t so this is the velocity of the object किंतु हमको क्वेश्चन ने पचारछि तार एक्सेलरेशन केते नाउ एक्सेलरेशन पई वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी नाउ तो dv by dt is acceleration so this is again d by dt of v तो v रो हमें ए एक्सप्रेशन टा पाइचे तो ताको हम एमती लिख परिबा दिस इज a1 plus 2a2t तो जेमती एठी तीनटा टर्म रो हमें डेरिवेटिव बाहर करथिले एडी सेमती दीटा टर्म रो डेरिवेटिव कैलकुलेट करिबा फर्स्ट टर्म इज अ कांस्टेंट a1 टा कांस्टेंट सो d by dt of constant is 0 प्लस सेकंड टर्म रो कांस्टेंट पार्ट अछि 2a2 ताको अलगा कर दियो इनटू dt by dt is 1 so the acceleration of the particle is 2 times a2 तो this is how जदि हमको displacement as a function of time देइची x टा एठी displacement which is given as a function of time
टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम आम डिस्प्लेसमेंट टा केते लिखिचे सो इफ यू नो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ताहले एई फंक्शन रो जब तमे डेरिवेटिव बाहर कलो विथ रेस्पेक्ट टू टी ताहले सेइथुरु तमे वेलोसिटी पाई जिवो वेलोसिटी जहा पाइलो इफ यू टेक डेरिवेटिव ऑफ दैट विथ रेस्पेक्ट टू टी ताहले सेथुरु तमे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर देई पारिबो तो एई भलिया कैलकुलेशन हमरो बहुत जगह एग्जांपल्स देखिबो